Good morning, students. On Wednesday, we have discussed how to find the dimensions of the given quantities using dimensional analysis. Today, we will do practice questions on that. First of all, you will find the dimensions of A into B in the given equation. E is equal to B minus x square upon AT, where E is the energy, x is the distance, and T is time. Next, you have to find the dimensions of A by B in the equation. P is equal to A minus T square upon Bx, where P is the pressure, X is the distance, and T is the time. So students, first of all, you have to solve these equations and then you will proceed with the last application of dimensional analysis, that is to derive relationship among physical quantities. अब इसमें क्या है, by using homogeneity of dimensions we can derive an expression for a physical quantity. इसमें क्या है स्टूडेंट्स, हमें क्या दिया होगा, हमें एक फिजिकल क्वांटिटी दी होगी और हमें फैक्टर्स दिए होंगे जिन फैक्टर्स पे वो फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड करती है, और हमें क्या निकालना है, how the physical quantity depends upon these factors. For example, here we have to derive a formula for the force F acting on a particle of mass m moving with velocity v in a circle of radius r. अब हमें गिवन क्या है कि फोर्स है और हमेशा सर्कल में कौन सा फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स. सो हियर F इज द सेंट्रीपिटल फोर्स. हमें गिवन क्या है, centripetal force depends upon mass of the particle, radius of the circle in which the particles moves and the velocity of the particle. अब हमें निकालना है कि इसका एक्सप्रेशन क्या आएगा, what will the expression of centripetal force in terms of mass, velocity and radius. First of all, we will write F directly proportional to m raised to power a, v raised to power b and r raised to power c, which will implies F is equal to K m raised to power, here K is the constant of proportionality. Then what you will do, then you will write the dimensions of all the physical quantities. Dimension of F will be mlt minus 2, dimension of v, that is velocity, will be equal to lt minus 1, the dimension of radius, that is r, that is radius is equal to L, and the dimensional formula for mass is capital M. When you will put the value, you will get mlt minus 2 is equal to m raised to power a, lt minus 1 raised to power b and capital L raised to power c. अब हम क्या करेंगे, अब हम सारे m, l और t को एक कॉम्बिनेशन में लिखेंगे. We will have m raised to power a, l raised to power b plus c and t raised to power minus b. अब हम क्या करेंगे, अब हम इक्वेट करेंगे पावर ऑन राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल इक्वेट द पावर ऑफ m. ऑन राइट हैंड साइड पावर ऑफ m इज a, ऑन लेफ्ट हैंड साइड पावर ऑफ m इज 1. सो वी विल गेट a इज इक्वल टू 1. नाउ वी विल इक्वेट द पावर ऑफ l. ऑन द राइट हैंड साइड पावर ऑफ l इज b plus c. On the left hand side power of L is 1. So we will get a equation b plus c is equal to 1. Now we will equate the power of t. Right hand side पे t की पावर है -2, left hand side right hand side पे t की पावर है -b, left hand side पे है -2. We will get b is equal to 2. अब इसे हम पुट करेंगे in equation 2. We will get the value of c as -1. Now the values of a, b and c is a is equal to 1, b is equal to 2, c is equal to -1. अब हम इसे ऊपर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. We will get f is equal to k m raised to power 1, v raised to power 2 and r raised to power -1. So the formula becomes f is equal to k mv square upon r. सिमिलरली हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें क्या है, वी हैव द वेलोसिटी v ऑफ वाटर डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ लैम्डा, डेंसिटी ऑफ वाटर रो एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g. You have to deduce the relationship between them. So first of all we have
वेलोसिटी किस किस पे डिपेंड करती है, लैम्डा रेज टू पावर ए, रो रेज टू पावर बी एंड जी रेज टू पावर सी। देन उसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, वी विल राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ऑल द क्वांटिटीज इन द इक्वेशन। डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी इज LT minus 1, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर लैम्डा इज L, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर density is ml minus 3, dimensional formula for g is LT minus 2. Now we will put the dimensional formula on right hand and left hand side. तो हमारे पास क्या आएगा, LT minus 1 is equal to L raised to power A, ml minus 3 raised to power B, LT minus 2 raised to power C. अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये सारे डायमेंशंस को कंबाइन करके हम सिंगल टर्म में लिख देंगे। वी विल हैव m raised to power b, l raised to power a minus 3b plus c and t raised to power minus 2c. अब next step में we will equate their powers. First of all we will equate the power of m. On right hand side the power of m is b, on left hand side the power of m is 0, so we will get b is equal to 0. Now we will equate the power of l. On right hand side the power of L is a minus b plus c, sorry a minus 3b plus c, and on left hand side we have the dimension of L as 1, so we will have a minus 3b plus c is equal to 1. अब ऊपर इक्वेशन से हमें क्या मिला था, b is equal to 0, so you will get the equation as a plus c is equal to 1. अब we will equate the powers of t. We have on right hand side the power of t is minus 2c, on left hand side the power of t is minus 1, so minus 1 is equal to minus 2c. यहाँ c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2. अब इसे इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करो, you will get the power of a also as 1/2. So you will substitute these powers in the equation. We will get v is equal to lambda raised to power 1/2, rho raised to power 0 and g raised to power 1/2. So the formula of v will be under root lambda g. Okay students, that's all for today.